This is the first question. This is comparatively easy. So put a timer on. I will also be putting a timer on. You have to solve this in 2 minutes. Okay, start. Okay. All of you are solving, right? If you get the answer, type it in the chat. Okay, your time is up. Now, come on, type in the chat what you would have answered. Come on, even if it is wrong, it's fine. Okay, Aniket, very good. B answer. What next? Does anyone have B? Okay. What else? What else? Statement 1 is true. Okay. But what about statement 2? Not sure. That is what you have to solve, right? Okay. Only 3 people have solved. What about the rest? Come on. You cannot be shy. You will become an MBA graduate. You should be able to speak in front of a lot of people. Come on. Don't be shy. Even if your answers are wrong, it's fine. But if you're not willing to answer, then how will you know whether you know these answers or not? B, B. Okay. Good, Shreyansh. Karan, good. At least you guys are answering. Okay. What others you are not going to solve these questions? Come on, don't be like that. It's okay even if you get wrong. Like even I used to get a lot of answers wrong. I practiced a lot and and only then I got better. Okay. A, okay. That's a different answer. Okay, we will solve this one. बैंक ए का तो सिंपल है कि 6.2% इंटरेस्ट है. Let's see what B bank is going to pay. 1.03. See, how did I come to 1.03? I just halved it. Okay, you are going to compound it semi-annually. So that is, after 6 months, you are going to be paid the interest.
So you will receive, your principal will become 1.03 times of it. And again, you will multiply by it. Okay, so the answer you will get is somewhat like this. Okay, so statement 1 is true. Okay, let's take a sum of money. It is going to double itself in 3 years. Okay, now let's see if I have 1 rupee, then after 3 years, after let's say 3 years, it is going to become 2. Then after 6 years, it's going to become 4. And after 9 years, it's going to become 8. Okay. Now the question is, it will be P times the original principal. So the original principal was 1, and now it is going to become 8. So this statement is false. Hence, C is the correct answer. Okay. Is this clear to everyone? Does anyone have any doubts? If you have any doubts, do let me know. I'll explain this again. Yes, what? Do you have a doubt? Clear. Okay, got it. Others also please reply if you are. I want to see 15 answers next time. Okay. 15 के 15 बच्चों को भी जेपी जाना है ना. ओके करण, वेरी गुड. ठीक है. ओके. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेक 2 minutes again. Okay, Roy is the fastest. Okay, stop now. Everyone, type out your answers. Roy wrote D. What about the others? I want 13 more answers. B answer is coming in negative. Okay. Uh, Others? Okay. So, uh, is the time that has been given to you, is that less for you, or the time is appropriate? Should I give you more time for solving? Please type it in the chat.
I'm getting no answers. Okay, like how to solve this, I will do it. Okay. Okay, so it is defined by graph of G intersects the graph of F. See, for any value, let's take value of x as 1. Okay, then what will be the value of f of x? It will be 6. Okay, if you take the value -1, then what would be the value? -2, that it will be put in the mod, and that will also come as 2. So mod of 2x plus 4 will come as plus 4 equals x plus 3. Okay, at x equals -1. Okay, but if you substitute -1 into the equation, let's say I'll put mod. I don't. Okay. I'll put 2 into -1 mod. Okay. The answer comes as 2. X plus 3 कैसे आया? See, when if you want to find points at which the lines intersect, then you have to equate the equations. Okay, so x plus 3 is the first option that we are going to try out. Okay, so we substituted it in the equation, and what we get is that 2 into -1 mod, that becomes 2. Okay, so this does not fulfill the equation. Okay, we will go to the next one. Okay, it equals 2x minus 2. Okay, so here again 2x will get cut and you will have no solution at all. Similarly for 2x plus 4 is 2x plus 3, you will still have no answer. Okay, let's try the final one. 3x have 3x minus 2. Okay, so here the answer comes as x equals 2. Sorry, the answer comes as x equals 6. Okay, so this is a positive number. So the fourth option is the correct answer. Is this clear to everyone? If you have any doubt, x का वैल्यू रहेगा क्या डिफरेंट? x और इसमें y कहाँ पे है? यहाँ पे सिर्फ x है.
Hello, am I audible? Yeah. Sorry, the internet got cut. Voice नहीं आ रही voice. Okay, sorry, the internet got. Okay, right. Okay. So is the second question clear? I'll yes. Okay. किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? Okay. Someone who was there who had a doubt in profit and loss. So try this. Be very fast. Do it in 1.5 minutes. Okay. Your time starts now. और जिसका जिसका आंसर है फटफट चैट में डालो. क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? दिस वाज सिंपल. ओके. सबका हो गया ना? ओके. ठीक है. हो गया सबका. आई एम गेटिंग द आंसर दैट दिस वाज सिंपल. सो इज एवरीवन डन? हाँ ना, कुछ तो बोलो. डी आंसर. ओके. ठीक है, ठीक है. ठीक है. यस. तो पेपर डुएबल लग रहा है ना अब तक? कि अब तक ऐसा कुछ लग रहा है कि सम कर ही नहीं सकते हम लोग? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? जम रहा है ना अगर इफ यू डू इट प्रॉपरली? सी, द थिंग इज, हाँ डुएबल लग रहा है ना. सी यू आर एबल टू आंसर. एंड देखो अभी भी टाइम है. यू हैव 2.5 weeks. गिव एवरीथिंग यू हैव और अच्छे से सॉल्व करो. सब प्रैक्टिस करो. सब रिवाइज करते जाओ अभी. यू विल बी एबल टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. एंड बिलीव मी, थिंग्स चेंज अ लॉट व्हेन यू गेट इनटू गुड कॉलेजेस. ठीक है. यस. ओके, वेरी गुड. चलो, ये वाला ले लो. फिफ्थ वाला ले लो. सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सीमैट इज कि 3 घंटे का पेपर है. So you may not be able to maintain your concentration throughout the 3 hours. नहीं तो the quality of the paper is कम, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है if you compare it to CAT. ठीक है. ये doable है. बट क्या है कि concentration lapse हो सकता है. इसीलिए concentration lapse होने के बाद you will start making mistakes. ओके. बी के जगह सी मार्क कर दिया. आई के जगह पे लग रहा है आंसर जे हो सकता है. 1600 के जगह पे लग रहा है कि 1800 आंसर हो सकता है. ओके. सो दीज आर लाइक द सिली मिस्टेक्स you will be doing. So what you can do is, what my strategy for maths was कि एक तो ऑनलाइन है. सो यू कैन चेंज योर आंसर्स. तो और टाइम भी बहुत है. तो एक बार कर लिया ना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर फर्स्ट से लेकर 20th तक कर दिया है, तो उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, और मेरा पेपर लेट से 30 मिनट्स पहले हुआ है, आई विल पिक अप सम क्वेश्चंस एंड आई विल स्टार्ट रीचेकिंग देम इन 20-30 मिनट, 20-30 सेकेंड्स. ठीक है. और हर क्वेश्चन है ना, वेरीफाई करते जाओ. फॉर एग्जाम्पल, इन लोग का एक एग्जाम्पल था, यही वाला ले लो. तो अगर 25% मुझे आंसर आ गया, मैंने कुछ सॉल्व कर लिया, ठीक है. अब ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट इनटू द आंसर. ओके, जैसे कि इट इज 25% ऑफ 320.
80, okay, 320 plus 80 equals 400, okay. So my answer is correct. ठीक है. So after you are done solving, you have to recheck your answers. So that's how your accuracy is going to increase. किसी ने पूछा था कि how my accuracy is going to increase. Okay. So this is how you do it. ये concept difficult नहीं है. You can do it. But यही है कि concentration end तक maintain करना है. So एक तो है कि रीचेक करना है तुम्हारे क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने, और जिनमें डाउट है ना उनको भी साइड में से लिख के रखो अपने पेपर पे कि दिस क्वेश्चन आई विल ट्राई डूइंग इट अगेन. ठीक है, मुझे रीचेक करने हैं ये. ओके, सो उनकी एक लिस्ट बना के रख लेना. ओके. एंड वन मोर थिंग आई एडवाइस यू इज अल्टरनेट डेज या 3 दिन में एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और वही टाइम पे करो जब तुम्हारा स्लॉट है. लेट्स से तुम्हारा स्लॉट दोपहर का है. सो क्या हो सकता है कभी कभी कि इफ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स, तो probably if you have eaten, you may get a little bit sleepy during that time. और फिर वो हालात में तुम्हारे मिस्टेक्स हो सकते हैं. और बिलीव मी, लाइक जो बच्चा जेबी में है और जो बच्चा जेबी में नहीं है, उसमें वो 4-5 मार्क का फर्क आ जाता है. 4-5 मार्क मतलब क्या है? लाइक वन क्वेश्चन इधर उधर. आई टेल यू माई स्टोरी ऑल्सो कि एग्जैक्ट दे रहा था मैं, एग्जैक्ट दिया मैंने. आई गॉट 99.25% है. ठीक है. बट उसमें क्या हुआ कि मेरा जो सेक्शनल कट ऑफ था ना वो 0.25 मार्क से रह गया. सो मतलब इतना पहले मेहनत डाला था मैंने, लाइक उसका कुछ फायदा नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ. एक क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा था मैंने एक क्वेश्चन में, एनओटी. तो वो क्वेश्चन गलत गया एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट गेट द कॉल फॉर एक्सेलर. ठीक है. सो दीज आर लाइक, सो कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. ओके, ये लैब्स बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए. एंड दैट विल हैपन ओनली इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स लाइक वंस इन 2 or 3 days. ठीक है. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ओके. ओके. ठीक है. सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी. ओके, आंसर आ गया. अदर्स, रॉयस बिकम वेरी फास्ट. सबका सी आया. सी आ गया. ओके. ठीक है. तो सी, देख मैं ऐसा हूं ना कि मुझे फॉर्मूला वर्मूला कुछ याद ही नहीं रहते. तो ये मैं कैसे सॉल्व करूँ? 2, 4, 6. ठीक है. 3 इसका आंसर आ रहा है. 12. अब मैं देख रहा हूँ ना कि इसका जो मिडल नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर आ रहा है. ओके. लेट्स से मैं और आगे चला जाऊँ. 4, 8. तो इसका आंसर आ रहा है 20. ये जो दो बीच के नंबर्स है ना, उनका एवरेज इंटू 4, मतलब 5 इंटू 4 किया तो ये आंसर आ जा रहा है. ठीक है, तो मैं ऐसे ही करते जाऊंगा. ये 95th टर्म पूछा है ना, तो चलो हम लोग थोड़ा ऐसे करते कि लेट्स से नेक्स्ट नंबर इज 10, तो दैट इज लाइक 6 इंटू 5. पहले था 4 इंटू 5, फिर उसके बाद था 6 इंटू 5. ऐसे करते 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 लाइक 2 consecutive नंबर्स. सो 9 इंटू ऐसे
अगर ये 18 तक गया तो क्या आएगा? दीज आर लाइक 9 नंबर्स, सो दैट विल बी 9 into 10, तो 90 आएगा। तो जो उसके बाद वाला नंबर रहेगा, दिस वुड बी माई करेक्ट आंसर। सो ABCDEFGHIJ। ओके, ये समझा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना इजी नहीं था। चैट में बोलो, इज दिस क्लियर? एक बार फिर से सर। ओके, सी, आई वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, ओके, कि 95th टर्म कैसा निकाले। तो जो सिक्स्थ टर्म रहेगा, दैट विल बी बी, करेक्ट? बी इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास 2 बार ए रहेगा और 4 बार बी रहेगा। ठीक है, सो its total will be 6. Also, if you observe, 6 is 2 plus 4 divided by 2. ठीक है, तो उसका आंसर आ रहा है 3 इंटू, ये कितने हैं? ये 2 है। ठीक है, तो इंटू 2, तो भी आंसर 6 आ रहा है। ओके, सो ये बेसिकली फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, n into n+1। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट। ये 2 हो गया, 2 into 3 = 6। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट 6। तो 2 + 4 + 6 आ रहा है 12। ठीक है, हम लोग इसको ट्राई आउट करते हैं। 3 3 into 4 दैट इक्वल्स 12। ठीक है, तो n into n+1 किया तो में आंसर आ रहा है। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 90 के आगे है। ओके, तो 9 into 10, सो दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे n होगा 9, n+1 बिकम्स 10। ठीक है, सो इफ यू टेक द nth alphabet, that is I. Okay, and the 10th alphabet was J। ठीक है, इतना समझा? ओके, ठीक है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। देखो, दिस वन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, सम्स विल गेट स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न हर टाइम रहने वाला है। कभी कभी स्टार्टिंग में टफ सम्स आ सकते हैं, बाद में सिंपलर सम्स आ सकते हैं। ओके, सो ये शिफ्ट हो सकता है। रॉय अगेन, वेरी गुड, 1200। ओके, हमें दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। समवन इज सेइंग 1200, समवन इज सेइंग बी। हम लोग ने घाई घाई में बहुत डिफिकल्टी नहीं, गलती नहीं ना की। देख लो एक बार, दिस इज एन एक्यूरेसी एग्जाम, दिस इज नॉट ए स्पीड बेस्ड एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोर आंसर्स, कम ऑन, जस्ट 2 people आर सॉल्विंग एवरीथिंग। बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
क्वेश्चन 6, यस, वी आर डूइंग 6th क्वेश्चन। ठीक है, इसको आराम से करना। ये देख के ही थोड़ा समझना चाहिए कि दिस इज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड, इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट स्लाइटली डिफिकल्ट साइड पे है। ठीक है, गिव मी आंसर्स, कम ऑन। रॉय का हो गया था बहुत पहले, सिर्फ वही टॉप करने वाला है क्या? स्किप। ओके, सी पलक, आई अंडरस्टैंड वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, दैट यू आर नॉट गेटिंग इट। ठीक है, हम लोग एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करने को ट्राई करते हैं इसको। सी, फिलहाल स्किप नहीं करना है, मतलब सी, इफ यू आर फाइंडिंग इट दिस डिफिकल्ट तो अभी स्किप करके यू कैन गो अहेड, बट अगेन वापस आना है क्वेश्चन पे एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, चलो विल सॉल्व। कि बिकॉज सीमैट में कैसे होने वाला है कि इफ यू आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, समवन एल्स इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और वो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलो विल स्टॉप सॉल्व। राइट, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है? PNR अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो P रखते हैं, टू टू रखते हैं इंटू R, तो पता नहीं, विल हम लोग R को छोड़ देते हैं। ठीक है, इक्वल्स 800। ठीक है, पे अपॉन 100 लिख दो। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 उसका स्क्वायर। एक स्क्वायर माइनस P। करेक्ट, वेरी गुड राम, करेक्ट। ठीक है, ये आ रहा है 900। सो यहाँ फिर थोड़ा और आगे सॉल्व करेगा तो PR 100 इक्वल्स 800। ठीक है, सो अगेन हियर will be P into 1 plus R by 50 plus R by 10,000। ठीक है, इक्वल्स 900। इतना समझ रहा है? सो इफ यू कीप सॉल्विंग दिस, डू यू वांट मी टू सॉल्व कि आई विल जस्ट गो टू द एंड? जस्ट लेट मी नो। इक्वेशन सॉल्व करते जाना है बेसिकली, आगे आगे। तो माइनस P रहेगा यहाँ पे,
then again, if you open the brackets, it will be like PR 150 plus PR 10,000. Okay, minus P plus 900. ठीक है. So and if you PP कट हो रहा है, then into 200 किया तो 200 PR. Answer comes as PR. पर यहाँ पे एक R स्क्वायर रहेगा. ओके, तो ये कट हो रहा है. Will be like 400 plus again PR upon 100 को सब्स्टिट्यूट करना है. तो like if you keep solving this, the answer will come what Palak rightly said is 25%. ठीक है. And just substitute it in the equation above and you will get the answer as P equals 1600. Okay. Equals 1600. ठीक है. Like इसमें किसको डाउट है? To practice more. Yes. See, what is more important than solving questions or solving question papers is the analysis. What you do. See, अभी इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि you will go on solving questions and you will keep practicing. You have to focus your efforts. And where are you going to focus your efforts on? Only on those parts of the syllabus where you are lacking in. जो तुम लोग सही कर रहे हो वो बस ऊपर ऊपर से एक बार देख लेने. बट जो तुम्हारी वीकनेसेस है, जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आ रहे, वो तुमको करने ही है. बिकॉज अगेन कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है एंड यू हैव टू गेट देम करेक्ट. ठीक है. ओके. दिस वन इज लाइक इजी. ये नहीं कर सकते. नहीं, चलो 30 सेकेंड्स में करो ये वाला क्वेश्चन. फास्ट, एकदम फास्ट. नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. इट्स नॉट दैट सिंपल. गलत है. सॉरी, सॉरी फॉर दिस. 5/12. ठीक है, क्या है आंसर? जल्दी लिखो, टाइम हो गया है.
क्या आंसर आया? कम ऑन, गिव मी आंसर्स. आर यू नॉट एबल टू सॉल्व इट? आई नीड टू नो. कम ऑन. तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्राइंग, ओके. बस ओनली वन पर्सन इज ट्राइंग, व्हाट अबाउट द अदर्स? लाइक आई एम, अगर अगर ग्रुप पे मैसेज नहीं डालना है तो डायरेक्ट मैसेज करो मुझे. ओनली पलक इज आंसरिंग. श्रेयस आंसर्स. राम आंसर्स. श्रेयस ऑल्सो ट्राइंग, ओके. तो टाइम चाहिए. वेरी गुड. इफ यू आर ई, करेक्ट है ऑप्शन, राइट. ई ऑप्शन. यस, डी इज द करेक्ट. करेक्ट, करेक्ट. डज एनीवन हैव एनी डाउट्स, और शुड आई मूव ऑन? ठीक है. So, ये कैसा कमेंट है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अदर्स, कम ऑन. ठीक है. डू यू थिंक दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड? Not a lot. This is like slightly on the difficult side. Seems lengthy, correct. तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं, इसका जजमेंट लेना है. सी, इफ यू आर अहेड ऑफ टाइम, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इमीडिएटली सॉल्व करवा दो. ठीक है, कि अभी अटेम्प्ट कर दो उसको. ठीक है, बट इफ यू थिंक दैट द टाइम दैट यू आर हैविंग इज लेस, तो इसको इसको छोड़ देना है फिलहाल के लिए. एंड ओनली इफ यू गेट टाइम देन यू कम बैक. ठीक है. सो लाइक आई वांट टू गिव यू टाइम ना. थोड़ा लेंदी है. टेक 5 minutes एंड अटेम्प्ट. लाइक इज एवरीवन ओके विथ सॉल्विंग ये टाइम एंड स्पीड क्वेश्चंस? आई होप यू आर डूइंग द क्वेश्चन. बाय.
uh, like what do you mean by why? Oh, yes. Okay. Okay. All right. All right. Okay. Are you done with the question? हो गया ये? I wanted to do the hard questions now. ये हो गया क्या? Come on, मुझे आंसर्स दो. ठीक है. इफ आई डोंट आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, तो ये क्वेश्चन करते और फिर बंद कर देते. इफ यू आर नॉट डूइंग द लेक्चर्स तो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ. कम ऑन, कीप इट इंटरैक्टिव. ठीक है. आई वांट मोर आंसर्स नाउ. ठीक है. सो हाउ विल आई, if when you read it, read the first D. Okay, Harshal is the only one who has answered. Okay, what more? Just one person answered. Aniket A. Okay, what more? Even if it is wrong, it's fine. सही है गलत है, अब attempt तो करो. And see, you are getting into MBA. You have to be outspoken. नहीं तो ऐसा होने वाला है कि if you are unable to communicate yourself, if you don't have the, what do you say, courage to speak up, so you are going to get ignored. The top companies are going to ignore you. ठीक है. ये जो कंपनीज होती है, ये उनका प्रेजेंटेशंस रखती है, जिनको प्री प्लेसमेंट टॉक्स बोलते हैं. सो उसमें दे यू हैव दे आस्क क्वेश्चंस, एंड दोज हु आंसर दोज क्वेश्चंस, उनका नाम नोट करके रखते हैं कंपनीज. लाइक बिग कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन, बिग कंसल्टिंग कंपनीज. सो जो जो बच्चे आंसर करते हैं उनका नाम लिख के रखते हैं कि इनको हमें इंटरव्यू में याद रखना है, इनको प्रेफरेंस देना है हमें इंटरव्यू में. सो तुम अगर अभी नहीं बात कर पा रहे हो तो बाद में कैसे बात करोगे? नॉट ओनली दैट, जीडीज में तुम्हें बात करना होगा, तुम्हें इंटरव्यू में बात करना होगा.
तुम्हें अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा तुम्हारे एमबीए लाइफ में. अगेन देन विल यू बी साइलेंट. इफ यू आर अनेबल टू आंसर दैट इज ओके, बट ऐसा नहीं है कि शांत बैठे रहना है. एमबीए में नहीं काम करने वाला वो. शायद टेक्निकल चीजें जो होती है उसमें काम कर, जैसे इंजीनियरिंग में काम कर जाए, कि तुम अपना अपना काम कर रहे हो और निकल जा रहे हो. ठीक है, बट हियर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. अमित gives like what hidden meaning. Babita 80 meters ahead of. Correct. That is the meaning. No, no, no. Uh, Babita is 80 meters ahead of Amit. So you should not write hidden meaning. You should write what is the interpretation. It's like a much better way to express it. Okay. So agar, uh, let's start with the answer. Okay. If the college is P kilometer far from his house, then P is 7.5 kilometer. So the house is basically 7.5 kilometer from his house. तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जा रहा है, द टाइम टेकन इज बेसिकली 90 मिनट्स. ठीक है. एंड अगेन इफ एंड ही रीचेस द कॉलेज 10 मिनट्स लेट, सो इज एक्सपेक्टेड ही इज 80 मिनट्स. ठीक है. इफ ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय. 4 मिनट्स अर्लियर. तो अगर स्पीड इक्वल्स 6 किलोमीटर पर आ रहा है, तो टी इक्वल्स 76. ठीक है. वेट. हेलो. इज देयर अ नेटवर्क इशू? आर यू अनेबल टू कनेक्ट? ओके, ओके. ऑलराइट. सो देखो, अगर इनके कंडीशंस हम लोग डालें, तो ये टेक्निकली आंसर आना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई कि अगर 7.5 किलोमीटर्स है, तो अगर मुझे 6 किलोमीटर पर आवर पे कवर करना है उसको, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आगे स्पीड पे, सो देन द
time will be 75 minutes. Okay, तो ऐसे ये सॉल्व किया जा सकता है. So is this understood? So this answer is coming as incorrect. So the statement one is false. Have you solved it by some other method? Okay. अभी अमित gives Babita a start of 80 meters. ठीक है. Correct. Babita start of 80 meters. ठीक है. तो what Amit will be covering? Let's say Babita covers distance x. Okay. Then Amit will be covering x plus 80. Okay. So winning post must be 140 meters far. ठीक है. मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है that should be 140. Okay. X and Amit runs 2.33 times fast as Babita. Okay. So अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस कवर करना है 140. So here x should come as 140. Now you have to verify it. So how will you verify? 2.33x should be equal to x plus 80. तो sorry, distance equals time into speed. Okay. तो ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ दोनों का टाइम बिकम्स इक्वल. ओके. सो द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंस दैट विल बी द स्पीड. ओके. तो यहाँ पे 2.33. Am I doing something wrong here? Point 33 into x plus ठीक है. I am doing something wrong. Wait. Okay.
60 मीटर्स इसको जाना है, इसको 140 मीटर्स है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई 60 इंटू 2.33। ओके, सो दैट गिव्स द आंसर एज 140। बेसिकली ना, ना सिंपली किया जा सकता है। आई वॉज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटिंग इट। ओके, इतना तक समझा है? शुड वी डू मोर? ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन is comparatively easy, so you will be able to solve it. uh, like probability किसको किसको आते, किसको किसको प्रॉब्लम है थोड़ा? ओके हर्षल, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी किसको आता है? कम ऑन आंसर। दिस प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। आता है? ओके, देन सॉल्व दिस विद इन 2 minutes। ओके, करेक्ट करेक्ट। Has someone got the answer? डी। ओके, कोई डी आया? और the probability that the word contains two s's together is 0.25। ओके, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला सम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड, पहले सैंपल स्पेस कितना होगा? यहाँ पे 8, 8 वर्ड्स है। ठीक है, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज, बट यहाँ पे दो वर्ड्स दो दो बार रिपीट हुए, सो इट इज लाइक डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर एक वर्ड इनमें से 3 बार रिपीट होता तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाता।
इतना समझा सबको? ओके, ठीक है, तो इसको रखते हैं सैंपल स्पेस। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड कंटेन्स टू एसेस टुगेदर इज, सो इसमें बेसिकली एस एस ऐसे होने चाहिए, और उसके आसपास द वर्ड्स कैन शिफ्ट। ठीक है, बाकी जो 6 वर्ड्स है वो शिफ्ट हो सकते हैं, बट ये एस और एस ये दोनों एक साथ ही होने चाहिए। सो इसको हम लोग एक ही वर्ड कंसिडर कर लेते हैं। सो यू कैन अरेंज दिस इन 7 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, और इसमें से भी देखो, अभी जो बचे हुए 6 है, इसको तो हमने एक वर्ड कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो इसको अभी वापस 2 फैक्टोरियल से नहीं डिवाइड करना है, ठीक है। बट अभी जो एल और एल है वो भी रिपीट हो रहा है, सो वी विल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, इतना तक समझा सबको? ओके, कुछ नहीं आया तो यस, ओके, थैंक, यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो वी विल जस्ट डिवाइड दीज टू। ठीक है, सो विल डिवाइड 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल divided by 2 factorial. Anyway, this is like very confusing, but assume this one to be like the, ठीक है, तो इसके बाद ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल निकल जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी ये 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। सो इसका बस 8 बचेगा, एंड इट विल बिकम 2/8, विल बिकम 0.25। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ये वाले में किसको डाउट है? आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट गेट दिस वन करेक्ट। इट्स नाउ क्लियर। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड begins and ends with L is 1.1 divided by 28। ओके, ऐसा होगा कुछ कि बीच में 6 वर्ड्स का कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, बट एल और एल दैट शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, सो 6 फैक्टोरियल है, so this should be like 6 फैक्टोरियल divided by 2, so this will be probability equals,
तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आई विल कीप दिस एज 1। दिस विल बी 1 डिवाइड बाय, हाँ करेक्ट, 28 आ रहा है, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये सबको समझा? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग यस। चलो विल, अभी इतना टाइम नहीं है कि विल सॉल्व एवरीथिंग एल्स। सो योर होमवर्क विल बी कि टाइमर लगाओ। मेरे तो दोनों गलत, सी, ठीक है। इवन इफ इट इज रॉन्ग ना, ठीक है, मेरे भी काफी गलत होते थे। सो मैं क्या करता था कि ये जो जो भी मेरे गलत हो रहे हैं ना, आई विल राइट देम ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, ठीक है, कि these topics I am continuously doing wrong. So in the morning, what I'll do is, मेरे जो भी सारे गलत हो रहे हैं, that I am revising again and again, again and again, ठीक है। इतना रिवाइज करना है कि फिर वो कभी गलत नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस, वेरी करेक्ट। प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस करिए फॉर, लाइक वॉट एवर डाउट्स यू हैव जस्ट आस्क मी राइट नाउ। एंड मेरे आगे भी 5 लेक्चर्स है ना, उसमें ही पूछ लेना। कांटेक्ट नंबर मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आई एम लाइक एक्सट्रीमली बिजी ना, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। एंड दिस इज लाइक द बेस्ट पीरियड इन योर एमबीए कि यू गेट इनटू अ गुड कंपनी एंड यू ट्राई टू कन्वर्ट, ओके। सर व्हाट्सएप नंबर, इसलिए आई एम वेरी, अभी कुछ डाउट्स है तो बोल दो ना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स राउट इट थ्रू राव सर। आई एम नॉट शेयरिंग बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मेरा लिंक्डइन बहुत भर चुका था। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग राइट नाउ, ओके। इफ यू हैव लाइक एनी क्वेश्चंस, थैंक यू पलक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट इट नाउ। और मैं आगे भी 6 लेक्चर्स रखूंगा, तो उसमें पूछ लेना मुझे, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा मैं। हाउ टू इंक्रीज स्कोर, सी, बेसिकली हाउ टू इंक्रीज स्कोर, गो टू माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। द उसमें तुम्हें जीके और आईएनडी पढ़ना है अच्छे से, तो उसका स्ट्रेटेजी कैसे वो मैंने बताया है। नेक्स्ट इज द 3 विच आर क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। सो इसमें प्रैक्टिस इज द ओनली वे। सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स अगेन। अगर तुम्हारा ऐसे देखो कि ये प्रोबेबिलिटी में गलत जा रहा है, टू सी प्रीवियस लेक्चर, आस्क सर, he'll let you know। होंगे मेरे लेक्चर्स वहाँ पे। इट्स इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर एमिंग एट। फॉर जेबी प्रोबेबली नो, मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे। हाँ, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड इन जीके। सो 99 की जगह पे तुम्हारे 95 हो रहे हैं तो भी ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईएनडी बहुत अच्छे से करके जाओ। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 20 में से 18-19 आ सकते हैं। माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट प्रिपेयर इट वेल, but I have a lot of friends in JB who got in because they had prepared IND very well. और उसका, what do you say, the portion is very less। और 20 पेजेस का सीमैट किंग का बाइबल करके जाओ, और सीमैट किंग के ही वो 290 क्वेश्चन है, वो करके जाओ। सो वो प्रैक्टिकली सब कुछ कवर कर देंगे, उसमें से ही 15-16 क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके आगे के यू विल हैव टू यूज योर लॉजिक, ठीक है, वो कहीं पे मिलने नहीं वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बट और what else is there? मेरे तो practice में- ठीक है, इज देयर एनीथिंग मोर?
मैं फटफट नहीं तो अगले क्वेश्चंस देख लेता. हाउ टू इंक्रीज अटेम्प्ट. यू कैन इंक्रीज अटेम्प्ट ओनली when like you are thorough with all the concepts. ठीक है. And the only way to be thorough with the concept is just prepare. सारे, if you want to take quants, एक एक सम करो हर टॉपिक का रोज. फिर कितने 25 टॉपिक्स के ऊपर तो नहीं होंगे क्वांट्स में. सो 25 क्वेश्चंस कर रहे हो उसको 2 आवर्स मैक्स. 2 आवर्स मैक्स में वो ही होना चाहिए. सेम डू इट फॉर लॉजिकल रीजनिंग. सारे टॉपिक में से एक क्वेश्चन कर लो. इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट उठा लिया, वो कर लो. एंड जस्ट सॉल्विंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू हैव टू एनालाइज कि अच्छा मेरे थॉट प्रोसेस में क्या गलत था और जो करेक्ट आंसर है उसका थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है. ठीक है. दैट इज द थिंग. और एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ इंटर्नशिप में तो लाइक इट्स वेरी गुड, यू गेट टू लर्न अ लॉट. अच्छी कंपनीज क्रैक करो. बट वहां पर भी तुम्हें एक्टिव होना पड़ेगा. मैं जो बोल रहा था कि यू हैव टू स्पीक अप. सो यू विल हैव टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. सिर्फ तुम अपने क्यूबिकल में जाके बैठ के काम नहीं कर सकते. तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, उनसे इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि स्पीकिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. और क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चंस? सी, आई गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट्स. ठीक है. अभी इसमें 4 डाइस थ्रोन है तो उसके डिनोमिनेटर में 6 6 रेज टू 4 आएगा. गेटिंग अ सम ऑफ 22 और मोर. तो उसमें 22 23 24 ये सम्स का आएगा. सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस वन. दिस इज लाइक स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. देखो ये वाला, दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो ट्रेन क्रॉस हो रही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो है ना, यू विल लाइक रिपीटेडली सी दिस क्वेश्चंस अपीयरिंग. तो इनको बहुत अच्छे से करके जाओ. पहला प्रायोरिटी इसको ही दो. एंड अगेन ये पाइप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. ये बहुत अच्छे से करके जाओ. these are like extremely important. Describe circle as radius. सी, ये ग्राफ ग्राफ कराना है. ग्राफ नहीं नहीं, ग्राफ नहीं कराने की जरूरत है. ठीक है. व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्वेटर? अगेन ज्योमेट्री है. ये सीईटी में नहीं था. ये देखो ये नया चैप्टर आ गया है. ये मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर रहेगा ये. तो ये बहुत अच्छे से करके जाना. सारे फॉर्मूले वगैरह है ये. द बेस्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, ये सारे फॉर्मूले है ना, एक शीट पे रख के रहो, लिख के रखो. एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग यू रिवाइज देम. ठीक है. सो ये एकदम बाहर हो जाने चाहिए तुम्हारे. यू शुड बी एबल टू आंसर ऐसे. ठीक है. फंक्शन एंड ग्राफ, हाँ वो फंक्शंस का करो ना. फंक्शंस इज कंपैरेटिवली इजियर आई वुड से टॉपिक, कि वो जो इंटरसेक्शन वगैरह होते हैं. इट्स ये अगेन अरिथमेटिक है ये. कंपैरेटिवली. आर यू आर यू फाइंडिंग द पेपर डिफिकल्ट और इट इज डूएबल? राइट इन द चैट. आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, और अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ किया और अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर किए, सो डू यू थिंक द पेपर इज डूएबल? कम ऑन, राइट इन द चैट. लाइक आई नीड टू नो वेयर डू यू स्टैंड. मीडियम, राइट करेक्ट. लाइक एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, वेरी गुड. मोस्ट. अभी 17 दिन में क्या करना है, मोस्ट से ऑल पे लेके जाना है. ठीक है. मोस्ट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर 75 to 80% देयर.
बस अभी वो लास्ट 15 मिनट दिन की मेहनत है। ओके। जो नहीं आ रहे उतने ही करो अभी, उस पे फोकस करो। हम्म। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मुझे बहुत परेशान किया था। नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुमारो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान किया था। तो इसको मैंने बहुत टाइम लिया था, और ये टाइम रहता भी है तुम्हारे पास। ओके। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू, इफ यू आर थरो विद द अदर ऑल द टॉपिक्स, ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं ना, सो यू कैन जस्ट फिगर देम आउट ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। दिस वन इज दिस वन इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, सो द होमवर्क फॉर homework is that you solve the rest of these 10 questions, and you're not taking more than 30 minutes. ठीक है, is this understood? और doubts लेके आना कि which questions you are able to solve, which questions you are not able to solve, which questions were taking more than, let's say, 8 to 10 minutes. ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। Is this understood? Yes, we'll try. You have to try this। तुम्हारा जो स्लॉट रहेगा उसमें ही अटेम्प्ट करने का ट्राई कर। ओके, चलो, बाय।